ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है। आज We welcome all of you to today's Bhagavad-Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं We are studying अध्याय का chapter 7वां श्लोक। verse 7. इससे पहले भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि जिस ज्ञान का उन्होंने पहले वर्णन किया The दूसरे jnana, the knowledge that he described earlier in the second and third chapter, से प्राप्त किया the royal kings received it और in the parampara, इस परंपरा का मूल स्रोत वह स्वयं है। and he is the origin of this parampara. He gave it to Vivaswan, and then Vivaswan gave it to Manu, and Manu gave to Ikshvaku. In this way, the kings received this knowledge. कि आपकी और हमारी आयु So on this, Arjun's question was तो आप ये that कैसे कह सकते हैं कि आप both of our ages are almost similar. Then how can you say that you gave this knowledge to the Surya Dev Vivaswan? मेरे और आपके बहुत जन्म बीत चुके हैं। Then he answered सब याद है लेकिन
We have passed through many समाप्ति हो births. गई है। I remember all of them, but और you have forgotten. उन्होंने कहा कि मैं अपनी And प्रकृति को then he said that नियंत्रित करके अपनी अंतरंगा शक्ति से यहाँ जगत में प्रकट होता हूँ। with my Antaranga Shakti, I तो एक appear in प्रश्न this उठता है कि world. आप कब जगत में प्रकट होते हैं, किस So कारण now से the प्रकट question होते may हैं be that when does he appear और किस and उद्देश्य से why प्रकट does होते he हैं। appear? What is his objective तो इसका उत्तर of भगवान appearing in इसी this में दे world? रहे हैं। So he is answering that question in this verse. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और So प्रसिद्ध this is श्लोक a है। very important and very famous भारत verse, में especially in India. अधिकतर लोग इस श्लोक को जानते हैं। Most of the people know इसमें this वो कहते verse. हैं कि हे भारत, So in this he is telling जब जब that, धर्म की हानि और अधर्म की O वृद्धि होती है, Bharata, तब whenever at all there occurs a decline of righteousness, dharma, यहाँ उन्होंने and an uprising of तब उसका unrighteousness, समय at बताया that time I manifest myself. और So किस here कारण he से is प्रकट telling होते हैं। the timing when he दो appears चीज़ों को and why ध्यान he से समझिएगा। appears. 2 points are इसमें मुख्य बात explained जो here. है वो धर्म की So बात the करते हैं। main point here is he talks about dharma. धर्म का जब क्षय होता है तो उस समय मैं अपने आप को When प्रकट dharma करता हूँ, declines, क्योंकि धर्म की then स्थापना I appear, धर्म का एक उत्तरदायित्व है। जैसे हम because establishing dharma देखते हैं is one of जैसा his हम जानते हैं कि responsibilities. संसार जो है वो As we तीन know प्रकार की स्थितियों से that गुजरता है। this सृष्टि world goes स्थिति through प्रलय। 3 stages of इसके creation, maintenance, and अधिष्ठाता destruction. ब्रह्मा जी हैं So the Adhishtata of और creation is भगवान Brahmaji, विष्णु हैं। and the Adhishtata of किसी maintenance स्थिति को is Bhagavan Vishnu. रखने के लिए So to हमें maintain देखना anything, पड़ता है we have to कि जो see चीज उसमें अवरोध that पैदा कर रही है whatever is creating obstacle in उसका that, हम निराकरण करें। we should remove the obstacle. तो धर्म जो है वो स्थिति को So dharma संभाल के रखता है, उसी को धर्म maintains बोलते this हैं। world. That धर्म is की why it जो is called व्याख्या dharma. है वो यही है। Dharma word is धारणा explained like this. याहू धर्म धार्यते धर्मेण विधृता प्रजा या धर्म धार्यते प्रजा, दोनों प्रकार के पाठ मिलते हैं। यह स्यात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। तो धर्म शब्द जो है वो ध्री धातु से बना है, जिसका मतलब Dharma होता है word कि is made with Dhri dhatu. It means जिसको to हम hold कपड़े बोलते something. हैं कि Like उन्होंने you have worn clothes. वस्त्र धारण किए हुए हैं, So we say that we have done या dharan आप of the किसी vastra. We भारी have चीज रखे हुए holding हैं, on to the उसको धारण clothes. किया हुआ है। Or if you have तो something वस्त्र in your धारण का pocket, जो चलन that है we are doing dharan means we are उसको holding on to धारण that. कहा है। Or if you are carrying तो some weight, धारण का means we मतलब have done किसी dharan. We are चीज की holding स्थिति on. को बना के So रखना, dharan means to maintain the status या इसका quo of मतलब something. To maintain धारणा something. यही है। धारणा That is मतलब what कि जो धारण करे, dharma means here. उसको बना कर रखे, Means which उसको maintains धर्म it. बोलते हैं। That is called dharma. तो वस्तुओं के अपने धर्म होते हैं। So objects have their own dharma. Every आग का एक धर्म है, object has जैसे its अग्नि का own धर्म है dharma. जलाना, Like the dharma of जल का fire is to burn. धर्म है अग्नि को बुझाना, The dharma of water is to extinguish fire. पानी गर्म होगा तो भी अग्नि को If बुझाएगा, water is hot, then सूखा रहेगा also it will या it बहना, will extinguish the heat बहता because that रहेगा is its तो भी dharma. उसका धर्म Or है। to flow downwards, that is its dharma. तो ये तो है वस्तुओं के धर्म। So इसी this is प्रकार the dharma of the प्राणियों के जो objects. जीव जंतु Similarly, की the उनके भी different अपने धर्म species हैं। of life, they also have their own वो किस तरह dharmas. से बर्ताव Dog has करते its हैं own dharma, how to उसे behave. प्रकृति बोलते हैं। That is its प्रकृति prakriti, उसका that is धर्म its बताती nature. है। Cat has its उसके भी own अपने धर्म हैं। dharma or nature. Cow has its own वो dharma or कब nature. फल Even देगा, plants, कितनी trees, देर they में have their फलेगा, own dharma or nature. When they will flower, when there will be fruits, how long they will ये सब live, होता है। what is the favorable लेकिन यहाँ पर जो uh, धर्म की बात amount की or गई है timing वो for इससे water, भिन्न other प्रकार की है। nutrients. But here the dharma वो that है Bhagavan धर्म is जिसको speaking हम about, that is स्वाभाविक धर्म different. कहते हैं। तो Here ये जो धर्म है ये तो स्वभाव से उनमें रहते हैं। one the dharma I described till उसको now बनाना was है, according to बाहर its से नहीं आता है। nature. The Agni or fire has not अग्नि जल acquired गई that dharma from तो outside. जलाने It लगे, is not that fire was not burning earlier and it started burning. It has जैसे not हमारे कपड़े हैं, caught hold of that जिस dharma. पोशाक में हम पैदा नहीं हुए हैं Like we are wearing clothes.
We have not been born with the clothes. We have got it from outside. Similarly, there are some rules which are helpful in maintaining the society. They are called dharma. And so we have to hold on to them, meaning we have to obey those rules. For example, there is a rule for transportation. Let's say if you go on some road, then there are so many vehicles plying on that road. Some vehicles are coming in your direction and some are moving in the opposite direction. Some are towards you, some are going away from you. So if we do not make some rules and regulations, then there will be clash, there will be accident, and it will cause major loss. That's why there are some rules of traffic. So you can say that is the dharma of traffic, and we have to follow them. The rules of traffic are not such that they are just automatically like that. We make those rules so that the traffic continues in smooth way. If we do not follow them, then the traffic will not move in a smooth manner. Then there will be traffic jam. So the main reason for that traffic jam is somewhere or the other, somewhere has not followed the rule, broken the rule, whatever may be the reason. It may be due to some accident, or somebody's vehicle is vehicle broke down in the middle of the road, or somebody had placed a vehicle in the wrong way, the middle of the road. So some reason must be there which is causing obstruction in the traffic. So then the traffic won't move in a smooth way. So similarly, in order to function properly in the society, Bhagavan has made some rules. And if we follow those rules properly, then our society will function in a systematic, in a cohesive manner. Why? Because we are not the only people in the society. There are so many people in the society, and everyone has his or her own desires. And those desires also conflict among each other. Like in traffic, some vehicles are coming towards us and or maybe moving in the same direction as we are moving, and some are coming from the other point towards us. So there is a conflict of direction between them. If they are all moving on the same road, they have to move very carefully, avoiding clashes, avoiding hitting each other. Otherwise, there will be accident. Similarly, we also have desires, and our desires conflict among each other. If I want to obtain a position, you also want to obtain that position. So post position is same, but multiple people want to obtain that. So everybody wants that he or she should get that post and the other one should be rejected. So then there are some rules and regulations that if you clear this particular exam, or you clear the cutoffs marks in such and such exam, or whoever becomes the topper, he will clear. Because if such rules are not made, then there will be fight. People will fight among each other as to who should secure that post. So rules are made because we have different desires and we have different levels of energy or different types of shakti. Some people have more power, so they will end up controlling others or exploiting others. So that is why rules are made. There are laws framed by the government. Court judiciary system is made so that people obey the rules properly. So in order to make the government or the country function in a cohesive manner, these rules are made. If there is a society or an institution, it has its own rules. If you have a family, you have your rules, that this will be the timing for breakfast or lunch or dinner, or this is your room, this is my room. So if there are such rules, then only the society will function in a proper way. When people stop functioning properly, then there will be chaos. If you have limited food in the home, or some sweets or some exotic items, and if only one person consumes everything, then others will protest.
So it should be divided among इसी प्रकार everyone. के नियमावली को That's why there are rules. धर्म कहते हैं, और ये धर्म So केवल this set of मनुष्य के rules is जीवन के called लिए नहीं, इससे dharma. हमारा And आगे dharma is meant not just for this particular life, हमारे it अनेक is also जन्मों required for द्वारा our बहूनि upcoming जन्मानि lives. जन्मानि तव चार्जुन, Like Bhagavan, we don't have just, this अनेक is not जन्मों our में हम only birth. बीत चुके We हैं, have many births. Like Bhagavan आज said that we have passed through many जीते हैं, births. नहीं तो You शेष have है। forgotten them, तो हमारे but I पूर्व जन्म remember. रहे, आगे भी जन्म रहेंगे। So तो आगे I जन्म में have जो past हमारे life. इस जन्म के We had कर्मों का past फल lives है, and we will have future births also. So तो our हमारे future अभी जो births जन्म है depend उसका on फल अच्छा our होगा the तो karma अगले जन्म done में in the कोई present दुख होने birth. वाला नहीं है, या कोई हानि नहीं होने वाली If है, you are उसका फल following तभी मिल traffic जाएगा। rules, तो or if इसी you break प्रकार the से traffic rules, you will get the results जीवन accordingly जीवन immediately in this life ये जो itself. It धर्म has है nothing to इसका do with प्रभाव next एक life. ही समाज में नहीं, लेकिन इससे आगे तक भी जाता But the dharma that Bhagavan is telling, है, और उसमें अगर that अव्यवस्था dharma हो जाती है तो influences उसका our future lives सुधरना also. नहीं, So if there is और इसका फल है discrepancy in following that dharma, then फिर there भगवान will be chaos in the society. और भगवान की So जो कृपा mainly it होती is the है, responsibility of Bhagavan to ensure that जो dharma is आपकी जो maintained सरकार है, in the तो वास्तव में society. And the representatives of Bhagavan, like there were kings earlier, पहले so जमाने में जो they राजा were हुआ करते appointed थे to अपने देश ensure के, the maintenance of dharma only. ये जो है The in the earlier ages, नीति the के main अनुसार duty of धर्म का kings पालन करना, was to लेकिन ensure आज की that people सोसाइटी follow में their own respective इसका एक dharmas. बहुत बड़ा अंग Like इसका now there ये है is कि a लोग सारे government, कानूनों का पालन करें, so जो major कानूनों का पालन नहीं करता है उनको दंडित होना major चाहिए, division of उसका government व्यवस्था is है। busy in और ऐसा ensuring that समाज people व्यवस्था follow में the होता है rules, people कि follow the जो laws. मानता है So उसको similarly, there is दंडित करने system के लिए in यम का Bhagavan's प्रयोग होता है, government. Those who do यम not का follow प्रयोग the कैसे होता rules, है? यम का they प्रयोग are ये है punished by Yamraj. That is कि what जो Yama नियमावली means. है, Yama and उस Niyama. नियमावली को आप पालन नहीं करते हो, तो जैसे यहाँ पर पुलिस So है, there are some rules. If you do not follow the rules, then you will be summoned by the police, उसके by the court. The सुपरवाइजर judge will punish you. और उसके दूत हैं, Similarly, there is Yamraj there. आपको पकड़ के ले जाएंगे, So Yamraj has his own जिससे assistants, the यहाँ तो वकील Yamadutas. नहीं है पहले, They will catch hold of you, and यहाँ तो आप अपना वकील खुद you will रख be सकते हैं, summoned in front of Yamraj, and there you will not get इसके any अलावा आप lawyers to help you. केस भी जा सकते हैं, Here you can appoint lawyers and you can frame even false cases and escape. वहाँ पर तो But there is no, उनको आपसे पहले ही पता है, there is no such इसलिए system in front of Yamraj. He doesn't need any lawyers. He does not आप need any witnesses, सुनिए कि and आपने केस किया, केस he कैसे does किया, not even need to tell you that because you have done this, you are punished like this. और There will be no कैसे justifications एक्शन ले given there. सकते हैं इसके विरुद्ध। Simply the क्योंकि punishments will इन्होंने be व्यवस्था ऐसी बनाई है announced कि there. उनको Because इससे he has made such a system that he जहाँ doesn't इसमें need all कुछ this. त्रुटियां हैं, Because in this system, whether कानून lawyers, बहस इस तरह से करते there हैं are कि some loopholes, उनको दंड defects. देते हैं, Lawyers often, many तो times, ये जो है प्रभावित हो सकते argue हैं, in such a way that they can influence the judge. कुछ लोग उनको भी प्रभावित कर देते हैं, धन से प्रभावित करते हैं, They may get influenced by money अपने और किसी or पद से प्रभावित कर power, सकते post हैं, position. तो वहाँ ये सब प्रभाव चलता नहीं है और किसी के साथ में अन्याय नहीं होता है। So in case of Yamaraj, all this तो influence हर post चीज़ money doesn't work, उनके पास में रिकॉर्ड and संग्रहित his रहता है, justice has no fault because every तो गुप्त रूप से every आपका सब the record of every karma is व्यवस्था रहती है, maintained in a secret way. जैसे सीसीटीवी It कैमरा is done by Chitragupta. उन्होंने आपके हृदय Like में सेट कर CCTV दिया है, camera records everything. तो So he जब has आप put the उसका camera in your वो सब chitta स्टोर only. रहता है, Whatever you do, whatever तो you आप think, उसको everything is getting recorded देखते there. हैं क्या है Then इसमें, he will open your hard disk and he will check everything, whatever तो इसलिए you कहते have हैं कि done, पहले से ही धर्म thought. का पालन कीजिए, लेकिन कुछ So लोग ऐसे हैं कि it is उनके said in अंदर advance only that why don't you follow वो dharma? जानते हैं कि But there are some धर्म people they don't listen. They know वो this उसको is नहीं wrong, करते हैं, but still they do it या अपने राग out of द्वेष के ahankara, कारण, or maybe due to their ragadvesh, the attachment and तो इसका aversions. जो है So the main problem is ग्लानि that होती है, जो उन्होंने कहा कि the मनुष्य में decline धर्म in की ग्लानि, dharma, वो धर्म की ग्लानि क्यों होती है, why does या that decline धर्म की happen? हानि, Why? तो उसका मूल कारण होता है हमारा राग और द्वेष। So the main reason is our अगर ragadvesh. घर में मिठाई है और 10 परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन मिठाई के पीस For 10 हैं, example, if there are और sweets in आपको home खाने and के number लिए of sweets पाँच is ही less बचे than हैं, number of members,
If you have attachment, then secretly you will take out more number of sweets, or you may even steal from others. क्योंकि आपका राग है It उसमें। happens. So why does that happen? Because you have raga, you are attached to that. Or if you have dvesha, you have aversion to तो someone, जहाँ so राग you want होता to है cause harm to वहाँ that. फिर धर्म की हानि So होती where है। there is raga and dvesh, there तो इसीलिए dharma अगर हम declines. स्मरण में लाएं तो दूसरे और तीसरे अध्याय में So भगवान ने that is बार बार why, कहा if कि you recollect, स्वरूप के Bhagavan सामने told many times that योग you नहीं, should राग rise द्वेष above raga मोह dvesh. इंद्रिय शरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्। तो ये इंद्रियों के अर्थ के कारण, राग द्वेष के कारण विमूढ़ात्मा हो जाता है, और वो कहते हैं कि राग द्वेष से वियुक्त होइए। So because of attachment to इसलिए sense इसको थोड़ा objects, सा हम person gets implicated in this raga dvesh. Bhagavan के advises to go इसको beyond raga dvesh, to rise above both. द्वेष से ऊपर That you उठिए। should rise above raga तो ये dvesh, जो above धर्म victory, है defeat, इसका सबका संबंध जो है वो above all राग these द्वेष से है। dualities. So now we will धर्म कहना understand that चाहिए कि these are all connected to दर्शन की dharma. घंटी बजाइए। Dharma does not mean that you just go to temple, you ring धर्म the bell and you come back. एक व्यवस्था है, Dharma is actually a नियमावली है, system, it's a set जिसका of पालन करना है। rules that you have to मंदिर follow. जाने का नियम भी इसलिए बनाया गया ताकि So आप the उसको rule of पालन going करें। to temple is also framed for that reason only, so और that लोग उसको भूल you जाते हैं केवल पैसे के regularly लिए, और recollect उसमें that लगाया जाता the है कि boss इससे is ये होता sitting, है, ये लाभ होता है, the वो लाभ boss is होता है। watching everything, he's there. और उसका कारण केवल यही है कि किसी So तरह से then आप they give स्मृति different बनी रहे, verses where there is इसलिए ये glorification of going to temple, जब what are the हम लोग benefits, बीमार में आ results. जाते हैं तो हमारी So what स्मृति happens खो is that जाती we lose है, our और memory उसमें when we कन्फ्यूजन come होता under है, the attachment, under the तो राग influence of द्वेष karma, होता है। we lose memory. मोहात् स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये ही चक्र चलता रहता है हमारे जीवन So में। this cycle goes on in जहाँ our भगवान life. में लोग आते हैं उनके साथ भी People यही come होता to है, the spiritual path, इसलिए बार बार same thing स्मरण happens के with लिए them कहा गया also. है कि Why स्मृति why भ्रंश smaran is क्यों कहलाता है, prescribed always? Why nam japa, इसलिए कि kirtan हमको ये all the स्मृति time? बनी रहे कि हमारे So ऊपर भी that कोई है, this memory remains that there is somebody who is sitting ऐसा नहीं above लगता us, कि मैं ही सब कुछ हूँ, who is the चाहे boss. आप इस दुनिया में Otherwise, कहें या ना we कहें, always feel that लेकिन we are all in मैं all, तो we सब are कुछ हूँ। everything, we are the अगर सब boss. कुछ नहीं हूँ तो कुछ तो हूँ ही। Our feeling is that we are everything. Even if I am not everything, at least I am something. और उसका मतलब मैं दूसरों से कुछ ज्यादा हूँ, And not only I am something, I am something more than others. तो जानता Who नहीं are मैं कौन you? हूँ। You don't know who am I. तो इसी कारण से अधर्म होता है, So this leads to adharma. और भगवान जो स्वयं And वास्तव में सब Bhagavan, कुछ है, who is actually वो अर्जुन का everything, रथ हाँक रहे हैं। he is driving ये Arjuna's ध्यान chariot. वाली बात है कि जो This is an वास्तव में important सब point. कुछ है, That one who is actually उनका everything, अहंकार नहीं है, he is not having any वो ahankara. एक छोटा काम कर रहे हैं, He रथ is doing such a ड्राइविंग menial करके। task of driving Arjuna's chariot. और जो कुछ भी नहीं है, And एक अणु those मात्र है, who are nothing, तन्मय वंशो meaning जीव just लोके, atomic particle, मेरा एक छोटा सा अंश है, just a tiny angsha, कोशाग्र सतभागस्य सतधा just कल्पते the वक्षे। 1/10,000th अगर part of आपका the बाल tip है, of hair. केश, उसके अगले वाले भाग का है, अगर 1000 हिस्सा करो तो उतना सा है हम हमारा अस्तित्व। Our और हम existence, सोचते हैं our कि हम size is कुछ that हैं, much, but still we think that we are उसके something, कारण से सारी समस्याएं खड़ी होती although हैं, we are so tiny. उसके कारण So से this सारी is why दुनिया all में problems भगवान arise, से and भ्रष्टता, then दुराचार, relations are ये सब spoiled, मिथ्याचार and then शुरू there होते is हैं। तो all, इसी को यहाँ पर people, then भगवान people बता रहे behave हैं कि in जब ये धर्म की ग्लानि होती है, improper way. और ग्लानि So का that's what मतलब ये Bhagavan नहीं is है कि teaching here, धर्म that पालन नहीं करते dharma हैं, declines. Declining धर्म dharma का विनाश means नहीं होता है। we do not follow the rules. Dharma is never नियम का destroyed, क्या विनाश होगा? because how can you destroy rules? हमें सत्य बोलना चाहिए, We should speak the truth. We should be truthful. अब ये तो धर्म का अंग है, अब हम बोले या ना बोले, This is an anga of अगर हम dharma. बोलते हैं तो Now, हमने धर्म whether को धारण we किया, speak truth or और lie, अगर नहीं that is बोलते up हैं to तो us. If we धर्म are का अंग है, truthful, तो फिर हमारे then धर्म we है। are doing dharma. Otherwise, we have adharma. तो ये जो ग्लानि होती है, So this decline that इसीलिए happens, it happens due to this reason only. हम अपने राग द्वेष से प्रभावित हो जाते हैं, और इसी को We नियंत्रण become करना influenced by raga dvesh. उनका प्रवृत्ति
And in order to control this समाज में only, धर्म की कोई there is dharma in the कहते हैं society. कि सतयुग में सब कुछ Actually, there is no need of dharma. Like it is said that in Satya Yuga, उस समय धर्म all की were कोई paramhansas. There was no धर्म की ragadvesh. कोई So आवश्यकता there नहीं was थी, no need of any dharma that time. There was no need of any king, क्योंकि कोई no need of धर्म any की court, आज्ञा करता ही नहीं था। because nobody और सब was लोग मिलके breaking any उसका rule of पालन dharma. पोषण करने लगे हैं If तो उसकी क्या everyone करेंगे, follows the पुलिस की क्या law, जरूरत रह जाएगी। then why do you need police? Why do you need court? अगर You लोग don't चोरी need all नहीं कर that. रहे हैं तो चोर If नहीं people होंगे, don't steal, there will be no thief only. और चोर नहीं होंगे तो पुलिस की क्या And जरूरत। if there are no thieves, then what is the use of police? तो इसलिए ये ग्लानि होती है So कि this is why सांसारिक dharma declines. So regarding this, there is a एक story. मुनि थे There was a Muni named Pippalad, और उनकी पत्नी थी बहुत and सुंदर थी, तो एक his दिन वो wife गंगा was very स्नान करने गए beautiful. And one day she went to the Ganges to take bath. तो There Dharmaraj also appeared. मन में काम का Dharmaraj संचार हुआ। saw her and he became infatuated with Kama. सती साध्वी पत्नी She थी, was a very वो chaste समझ गई कि woman and मेरे she पति की understood ये कामुक that दृष्टि, he is having तो इसलिए उन्होंने उनको श्राप दे lusty दिया कि feelings for me. क्षय हो। So she cursed him तो तब से धर्म का क्षय that होने लगा। you will कहते हैं decline. कि धर्म के जो Since चार then, पैर dharma हैं, started declining. सत्य, That's why it is said दया, that the four legs धर्म, on which dharma stands, truthfulness, mercy, सतयुग cleanliness, में and जो austerity. पैर थे In Satya Yuga, उसमें all धर्म four क्षय were हो गया। existing, and then dharma तो started ये declining. कहानी इसलिए सिखा हमको बताई जाती है So ताकि the इसमें एक story is सिद्धांत told मिले। to us तो धर्म का with क्षय the इसलिए objective हुआ that we learn the कि काम था, Siddhanta. So why dharma declined? Because there was Kama. काम रूपी जो संकल्प उसके मन में आया, The उसमें sankalpa धर्म of क्षय हो Kama गया। that he had, because of that dharma started तो इसलिए declining. भगवान ने तीसरे अध्याय में That's कहा why in the third chapter, महाबाहो Bhagavan had told सर्वभूतेषु that रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम, कि ये जो काम है, और काम का this मतलब है Kama, हम आवश्यकता से अधिक जब हम संग्रह करना चाहते हैं, Kama means when we want जो to get आवश्यकताएं हैं, more than what तो we उसमें कोई need. समस्या नहीं है। Like if we have लेकिन fundamental हमारी needs, कामना जब but तीव्र हो जाती है when तो हमको our आवश्यकताओं Kama is से अधिक strong, हम ज़्यादा चाहते then हैं। we want more than दूसरे की what we संपत्ति, need. दूसरे का धन, दूसरे का द्रव्य, दूसरे की Then we पत्नी, want to acquire others' दूसरे के wealth, बाल others' बच्चा, wives, others' तो उसी से property, फिर अधर्म फैलता and then है और dharma धर्म नहीं declines बनता। and adharma spreads. In order to control that, Bhagavan appears. तो इसलिए धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। That's why it is important to protect धर्मो dharma. हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मम न त्यजामि मानो धर्मो हतो अवधीत। ये युधिष्ठिर महाराज का वचन है यक्ष के प्रति। This is the statement by Yudhishthir महाभारत Maharaj की कथा to है कि जब Yaksha पांडव लोग regarding that katha in वनवास में गए, Mahabharata when Pandavas were in सबको exile, प्यास लगी, वो सब and one day Yudhishthir was very तो अर्जुन thirsty. से कहा He कि was sitting, कहीं he told आसपास में कोई Bhima, तालाब हो, just see नदी हो। around, check around if there is तो any पर्वत lake, पर चढ़ के उसने if you देखा can कि get some पक्षी water वहां for आ रहे me. थे, So when Bhima climbed तो उसने over the देखा tree कि and जंगल found में that थे, उसके some सामने birds पहाड़ था, were तो देखा वहां wandering, तालाब he था। guessed that there must be some water body, अर्जुन को भी प्यास So लगी, when he उसने भी went, वहीं he जाके found a lake, and himself was also thirsty, and he started drinking water. So there was a yaksha on the tree तो at भीम ने the देखा उसकी तरफ, bank, and he उसने कहा told to कि हे Bhim, अर्जुन, wait. तू पहले मेरे So प्रश्न का Bhim उत्तर saw दे। him, and the Yaksha told भीम that ने before उसकी बात drinking with नहीं this सुनी, water, you answer my पीते questions. पीते वो So Bhim did not अचेत हो गया। obey his order, and as soon काफी as समय बीत Bhim गया, drank that उसने water, कहा कि he fell unconscious. देखो अर्जुन, So a lot कहीं of time जिंदा had होगा तो passed, and बताना। then Yudhishthir told Arjun, अर्जुन please भी check, वही Bhim स्थिति has थी, not अर्जुन की returned. भी You वही, go. सहदेव की भी So वही। Arjun, Nakul, Sahadev, they all faced the same युधिष्ठिर महाराज situation. स्वयं गए, Then Yudhishthir Maharaj himself, he went there, और उनको तो प्यास and लगी ही थी, he was anyway thirsty. So when he तो वो started आगे was बढ़े, about to drink water, then he heard the same sound that उन्होंने कहा कि wait. चल मत पीजिए, So मेरे he प्रश्न saw का the उत्तर दे। Yaksha, तो and युधिष्ठिर भी Yaksha वही told him, स्थिति don't थी। drink the water, answer my भीम question. क्या So प्रश्न कर Yudhishthir सकते हैं। stopped, and he told, तो okay, यक्ष you ने please 100 ask. प्रश्न किए, So Yaksha asked him 100 questions, युधिष्ठिर ने सारे 100 and प्रश्नों का उत्तर
Yudhishthir answered all the 100 questions. So Yaksha was very pleased, and he said that I am satisfied with your answers. So I bless you that you, among these four brothers, you can bring anyone back to life, anyone. So Yudhishthir said that you bring Nakul back to life. So then Yaksha asked, why do you want Nakul? Because you will have to fight in the war, because your property, your kingdom has been unjustly acquired. So why not get Bhim or Arjun? They are great warriors, and you have so much love for them. So why do you want Nakul? So Yudhishthir said, I am a religious person, and I follow the principle of equality, and I have two mothers, my mother Kunti and the mother of Nakul, that is Madri. So Kunti, I am Kunti's son, I am alive, and if I tell you to wake up to bring Arjun or Bhim back to life, then Madri's both sons will be dead. But if I ask you to bring Nakul back to life, then at least Madri's one son will be alive. So Yaksha asked, what is the benefit? So then Yudhishthir said, I am not doing it for any benefit. Then he said this verse that if I hold on to dharma, if I protect dharma, then dharma will protect me. Because if I do not maintain dharma, then that dharma itself will kill me. Like if you do not follow the rules, if you follow the rules of traffic, those rules will protect you. But if you don't follow the rules, those rules will kill you. You will end up with accident. Even if you don't die, at least your some bones will break. That's why if we protect dharma, then dharma protects us. That's why Bhagavan appears to establish dharma. And what does sthapana or establishing mean? Meaning he makes sure that people follow dharma. It is not that dharma is some object which he brings and he distributes to everyone. It is something that we have to follow, imbibe in our life. So if we follow this, then our life will be, we will live happily and others will also live happily. But if we do not follow dharma, then neither we will be happy nor others will be happy, because we will inflict suffering upon others also, and the result will be that we will also we will also suffer in future. Because either, even if we are not suffering now, it is guaranteed that we will suffer in future. So those who do not follow dharma, they are never happy. This is what we should understand. Nowadays, there is an illusion, a wrong idea in our mind. I remember that when I was studying in college, then also my companions used to say that our country is backward because of dharma only. Others countries, they have progressed so much. Why? Because they did not get into this all this mess of dharma. But we are so orthodox, and we just believe in all these unnecessary things called dharma. And science does not teach anything about dharma, and scientists have not seen any Bhagavan. So this is the main reason why we are so laid back, backward. So this is a great surprise how people think like this. It's like you say that why I am not healthy because I am not drinking poison, and why others are healthy because they are drinking poison. So this illusion is still there in the society, and the main reason for this is our education system. Because in the education system, nothing is taught about dharma. This is a great surprise that Bharata, which was always
rooted in dharma, and so much dharma was there in Bharat. Great rishis, avatars who appeared in this country. But today our situation is that we consider this dharma to be the cause of our being backward. So why it has happened? That because we have been educated like that. It has been taught to us like that. All the glitter and glamour that we see around, और वो अब दुख प्रकट होने लगा है जितना भी जो that is the cause of the पॉल्यूशन बढ़ता suffering, हुआ है and क्योंकि you can now you can see the suffering manifesting. So much pollution is there everywhere around. If you do not follow dharma, then there is adharma, and that adharma is a pollution. It's a defect of the mind. दूषित हो जाता And है when our mind is polluted, तो वही then प्रदूषण बाहर फैलता है we spread that same pollution around हमारे in वातावरण the में society सबसे also. पहला So पैदा whatever हुआ है pollution we see ये in the हमारे भीतर ही से environment, हुआ है ये that हमने pollution has come from बाहर से within only. दिखाने के लिए नहीं आया We only have spread that भगवान ने pollution. भी तो हर चीज को Bhagavan has not प्रकृति से appeared to बनाया है spread that pollution. Prakriti उसी प्रकार से controls, बना के चलता है Prakriti balances माया ही everything. इस प्रकार से है कि जो Prakriti is made in such a way वो ऑक्सीजन that all देता है the trees, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते plants, हैं they तो वो तो हमारी सहायता के लिए लेकिन release the वो अगर oxygen. हम ही काटे हैं तो प्रदूषण तो हम ही So फैला they रहे are हैं meant for our benefit, but if we cut off those trees, then we will only उसका कारण suffer. मनुष्य ही है So the main reason for this हमारा जो खान पान अब प्रदूषित हो destruction गया is है human being वो only. प्रदूषण है Our food has become so बाहर much का जो contaminated. खाना है Everything, उसमें every पता नहीं क्या क्या food मिलाया item जाता है outside is contaminated. You can't imagine what पहले जो all is there in that. इंग्रेडिएंट है जो सामग्री है Earlier, चावल the ingredients गेहूँ that सब्जियाँ we had with the सारी rice, चीज़ें wheat, उसमें और उसको जो now बनाते हैं those वो ingredients are also और प्रदूषित polluted, कर देते and हैं those who are cooking, they are स्वाद के polluting नाम that पे even more, तो ऐसा क्यों है just to increase that, क्योंकि improve the धर्म taste. So why it is व्यक्ति happening? It is धर्म से happening due कमाना to चाहता है adharma. Every person wants to व्यक्ति earn पैसा क्यों more and कमाना more. चाहता है कि Why he जिससे wants to earn more and more? So उसके that he can रोगग्रस्त enjoy दूर the हों senses, because if there is वही wealth, बात then कर्म there की is है kama. So that then everything काम comes करने back के to that बाद kama only. The main reason काम is के कारण kama से ही only. प्रदूषण होता So all the pollution is due to kama only. है तो उसको हटाने के लिए So in order to get rid उसको of that, बैलेंस करने के लिए in order to balance that, उसकी समता बनाने के लिए भगवान यहाँ पर to अवतीर्ण maintain the हुए equilibrium, Bhagavan says मैं here तो प्रकट करता that हूँ I manifest myself. ये जितना भी So अब एक प्रकार का प्रदूषण तो ये है कि हम चीज़ों में one type of गलत चीज़ें pollution मिला दें is that जैसे आप देखते we पढ़ते mix हैं कि the आजकल जो wrong घी आता items है वो in the शुद्ध food. नहीं है Like you hear nowadays, the उसमें ghee विष is होता है nowadays is not pure. It is made with ऐसा animal है कि हम fat. चीज़ों को ही And other thing जेनेटिकली is that मॉडिफाई कर दें we modify the items only सब्जियां genetically. That is also one type of pollution. Like परिवर्तित कर दिया nowadays we दूसरी have the genetically modified और उसी प्रकार जो vegetables. प्रजातियां हैं गाय की Similarly, भैंस की the उनकी भी species प्रजातियों को हमने बदल cow, दिया buffalo. So we have genetically modified them also. So who does all पशु this? लोग जो हैं Human being only. पेड़ पौधे वो कोई Animals, प्रदूषण नहीं फैलाते plants, trees, they don't spread any मनुष्य ही pollution. है It is human being मनुष्य ही only. तब फैलाता है जब उसके मन And में human प्रदूषण being आता also है does that when his mind उसका becomes कारण उसका polluted. मन ही है So the main reason for this is जब adharma तक इसको only. समझेंगे नहीं Until and unless we तब understand तक हम ऐसे this, ही चलते रहेंगे we will continue like जब this only. समझेंगे कि धर्म के And we कारण से will होता है be under the illusion that धर्म के कारण से dharma is होता है लेकिन responsible हम for जानेंगे this. कि धर्म It का is भी not because of दुरुपयोग होता dharma. है Yeah, people may misuse उसके नाम पे dharma, धर्म and करते in हैं the name of उसको dharma, जानेंगे they नहीं may do adharma. So that is not the fault उसको of खड़े dharma, होकर कोई बताएगा नहीं आपको because कि dharma धर्म is क्या not है going to stand here and tell that I am dharma वो and उस you are प्रकार wrong. Dharma is, what is dharma? Dharma is a system. It's a set of उसको rules. गलत So तरीके से if समझें you understand that in उसको the गलत wrong यूज way, करें उसको if you मिसयूज करें derive the wrong interpretation, if you misinterpret दूसरों का it, शोषण करें and then you समस्या ये exploit है कि आदमी others. के अंदर जब Because the काम problem आता is है this only, that तो वो हर when चीज़ you का are infatuated with karma, दुरुपयोग करता है then you want to acquire everything for उसका yourself. दुष्प्रयोग करते हैं People preach dharma तो इसलिए also, ज़्यादा and आवश्यक है
do that preaching for their own benefit, they misuse it. क्योंकि So ये भी you बहुत have to बड़ा धर्म understand है, what is dharma. इसको What is इस this जैसे set of rules called देवी dharma? देवता की पूजा Because करें, there इस is नाम का a जप करें, lot of इस wrong नाम का जप understanding. करें, People remain इस नाम का confused. व्रत Which करें, devata should I worship? ये Which mantra should I chant? Which vrata should I do? इसका Which book should इसका I क्या है, study? So, what is इसका प्रमाण dharma क्या है, यानी कि धर्म को and जानने का मार्ग क्या है, what is the praman? इसको भी Meaning, जानना how to आवश्यक है। know अगर dharma. मेरे को So, धर्म का that also you have to जानने के लिए understand how कोई to know dharma, इंस्टीट्यूशन from where to know dharma. Because if जैसे you don't know समाज में dharma, how will you follow dharma? कॉन्स्टिट्यूशन है, Like in संविधान है, society, there is a constitution of the नियमावली है, government, दंड संहिता है, there is law उसका मेरे book. को ज्ञान होगा तभी तो मैं So उसको if I have knowledge of जिसको that, ज्ञान ही नहीं है then तो only उसको I will be able to ज्ञान follow कैसे it. मिलेगा। If I don't know, then I have to study that. तो I इसलिए have to get the धर्म knowledge. धर्म का प्रमाण क्या है, Similarly, धर्म का what जानने is का the मार्ग क्या praman है। for dharma? What is the way to know शास्त्रों में dharma? लिखा है कि वेद So for सर्वो that, शास्त्रम Manusmriti न्यायस्य says, च प्रिय आत्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम, कि धर्म को जानने के लिए चार उन्होंने विधि बताई हैं। Manu Maharaj has सबसे told पहले है four वेद, ways to know dharma. First is Veda. तो वो मूल है, That is the main root वेद foundation. स्मृतिशीले च तद्विदाम, तो मूल है धर्म का वेद। The root of वेदों dharma is शास्त्रार्थान Ved. प्रणीतम, धर्म का प्रणयन प्रचार भगवान ने स्वयं किया है, Bhagavan तो वेद himself है। has given this dharma in the form of Ved. और वेद आजकल लोगों की समझ में नहीं आते हैं, Nowadays, इनको people don't जानते नहीं understand है, तो Ved. उसके बाद में They are not qualified to स्मृति study शास्त्र Ved. है। So then after Ved, there is Smriti Shastra. स्मृति में इतिहास पुराण So in धर्मशास्त्र Smriti, ये you सब have Itihas, Puran, Dharma Shastra. इनको कोई These are they are available. Anyone इसमें ऐसी can कोई study them. नियमावली नहीं है कि There ब्राह्मण is no ही such पढ़ेगा, rule for क्षत्रिय that. That वैश्य नहीं only पढ़ेगा, वही पढ़ Dvija सकता है। can study उसके that. बाद One who has undergone व्यास जी Upanayan can study that. Vyasji कृपा wrote करके Mahabharat for this reason only, that कृपा करके उन्होंने जिनको अधिकार mercifully, नहीं है उनके लिए those who do not उसमें have वेद भी है, adhikar, eligibility to महाभारत study भी है, Ved, वो महाभारत से भी मिल जाएगा, for them he gave Mahabharat. So लेकिन उसमें whatever कुछ knowledge you get from Veda, you get from Mahabharat also. But then you have to study Mahabharat टीवी also. सीरियल ही देखें, But if we do not study Mahabharat, we just watch टीवी the सीरियल ही television देखें, serial. So वो at पालन least नहीं करते, for the लेकिन bare टीवी minimum, सीरियल है, watch the serial टीवी only. सीरियल में वो But the अपना problem is in the TV वेद भी serial, देखें, they do their own तो mixing ज्ञान with. मिलता ही है वहाँ से। Still, you get some तो उसको knowledge देख करके definitely, जीवन में and उसका watching that आचरण करना whatever ये you ज़्यादा learn, then उपयोगी है। imbibing that in your own life. और तीसरा है फिर And सदाचार, then the third is Sadachar. अगर उतना भी नहीं है तो जो If you have not शास्त्रों learnt का क्या आचरण है, वो Smriti किस तरह से आचरण करते Itihasas हैं, also, then उसको observe अपनाना the है। Satpurushas, watch their behavior of the और चौथा Satpurushas, है जो and then आपको behave अच्छा लगे, accordingly. And the fourth is what लेकिन you आपको like. अच्छा लगे वो तभी है जब ऊपर वाली चीज का ज्ञान आपको हो। But this rule मेरे of को तो what you इसलिए like is अच्छा लगा कि applicable वेद only पढ़ने when में, you already have knowledge of the Vedas, Smriti चौथा वाला Shastras, इसलिए है क्योंकि कुछ नई and चीजें हैं the जो हमको शास्त्रों में नहीं मिलती Sadachar हैं, of Satpurushas. So the fourth one is given because some जैसे things there are some things you may not get in the Shastras. Like there was no tomato earlier मिर्च भी नहीं थी, in India. There was no आलू भी नहीं pe- था, pepper, the mirch. तो There was no potato. तो जैसे हम So देखते हैं like कि हमारी जो न्याय hmm, प्रणाली है उसमें जो we see our the legal system is there. अथॉरिटी है वो सुप्रीम So कोर्ट in है, that the topmost उसके authority नीचे is हाई कोर्ट है, Supreme Court. Below that there is High Court, and then there are below that there are lower तो अगर courts. सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है So तो if Supreme उसके Court विरोध में gives a verdict, हाई कोर्ट कुछ नहीं कह then सकता, High Court cannot हाई object to कोर्ट that. कुछ कहता है तो उसके If विरोध High में Court gives a कुछ नहीं कह verdict, the सकता। lower courts cannot object तो to फिर that. वेद जो है इस तरह से Similarly, सुप्रीम कोर्ट है, Ved is सुप्रीम like कोर्ट है। the Supreme Court, और उसके बाद में स्मृति जो है and वो then हाई कोर्ट है। there are Smritis which are like the High Court. तो अगर स्मृति में कुछ So चीजें ऐसी हैं जो if वेद there में are some things in the वेद में किसी Smriti जगह नहीं which दिखती, are in opposition to तो the वो Ved, सर्वोच्च then that is not प्रमाण accepted है, because वो Vedas are स्मृति है। the topmost Praman. फिर Then सदाचार there है, are Smritis, then there is Sadachar. सदाचार भी जो है वो So
Sadachar also cannot go against Smriti and Ved. If somebody is behaving in a certain way, but he is consuming bhang, etc., then people say this is sadhu, they also do that. But all this is against the Smriti. In our Smriti, all this is forbidden. तो फिर जो स्वस्य च प्रिय आत्मा ने जो मेरा अपना प्रिय है वो भी धर्म का एक Then प्रमाण क्यों one who बताया गया is है कि वो इसलिए कहा गया है कि what then why the fourth वो point is जिसको given, what is priya to us, what we like. So that point is given because there are some things for which you will not find any mention in Veda, Smriti, Puran, etc. Then what to do about that? Like I said, in Bharat earlier, why 500 years back, there was no tomato, potato, अभी आ गई हैं, but now एक हंड्रेड they के now बाद you उसका have सेवन them. करें कि नहीं सेवन करें, क्योंकि So शास्त्रों now में जो the लिखा हुआ question उसको is, लेना what should we चाहिए। do? We should eat all this or no? चलो अच्छी बात है, जल्दी आ गया। तो So तो उसमें एक तो ये है कि जो one point is साधु that हैं the उनको देखना होगा sadhus, कि भाई वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका एक अपना they are one praman, like संस्कृति होती है what do जिससे they वो समझ say? सकते हैं Because they have कि their क्या mental भोजन पद्धति vritti, है। they can understand तो whether उदाहरण this के लिए दे रहा हूँ, ऐसे कुछ food धर्म item में is good for us or no. कुछ नियम So होते I'm हैं, just giving for कुछ example, चीज़ें but ऐसी there may होती be हैं some जो इंसान activities, some करता है, rules also. And there are some things अगर which समाज change बदलता over है a तो period of नियम time भी बदल also. जाते हैं, Because लेकिन when the कुछ नियम society ऐसे बने changes, रहते हैं the rules also जो नहीं change. बदलते। But the foundational तो principles, they do इसलिए not change. स्वस्य च So प्रियात्मने regarding that, it is said that the fourth point, धर्म what is क्या according है, to your इसमें मेरा liking. प्रिय क्या है, या So then in बहुत that we सारी have चीज़ें to see ऐसी what होती is हैं, according to कोई my बताता है liking. कि इनमें से आप Like सबको if many items are सबको खाना available and चाहिए, Veda और says कौन सा all पसंद है are उसको मैं लूँ, accepted, so there you can decide लेकिन based on your liking which अगर item you शास्त्र like or समय don't like, समय because all are allowed by the शाकाहार Shastra. पदार्थों में कोई निषिद्ध पदार्थ नहीं है, If तो there वो is मेरे no food शास्त्र में item नहीं which है, is forbidden, वो मेरे लिए and बना हुआ है, within the set of जैसे food बहुत items सारे which are लोग allowed, you शास्त्रों can को take whatever you like. तो किसी को Other रोटी person पसंद can नहीं take है, what he किसी को likes. नहीं आता है, Somebody likes wheat, somebody likes तो rice. इसमें ये प्रमाण करना, So तो ये there, शास्त्र for से the fourth rule is आता है। applicable, what तो according इसमें to your liking. So like शास्त्र this, से Shastra is the pramana, and even if somebody does not हमारे know शास्त्रों ने Shastra, मतलब हमको इतना इतनी सहूलियत दी है our धर्म Shastras को समझाने के लिए, इतनी सारी जो कहानियाँ have हैं made पुराण में, so महाभारत में, much effort उसके बाद to सब हमको explain बहुत dharma कुछ to बता us. देते हैं। So many ये जो rules, गीता की stories, Puran, Mahabharat, उपदेश है ये भी all उन्हीं this, के the अंतर्गत आते teachings हैं, of Bhagavad-Gita are also embedded तो inside ये the उन्होंने story of एक Mahabharat only. सीधा So सा नियम दिया है कि आपको So अगर कुछ Shastra भी has नहीं given समझ us में नहीं a आता है धर्म के very बारे में, simple rule. और आपको It रुचि says नहीं that है, if you do तो not know एक anything नियम about आपको dharma, समझाया if गया you है are कि not educated at all, कुलानि परेशान न आचरित, कि जिस चीज को आप सोचते हो कि ये so मेरे Shastra says अनुकूल है, that for that thing उसको इसलिए ना करो। which you feel it is unfavorable, तो इसमें for आपको me, whatever you एक consider is unfavorable to you, don't do like that to others also. सब इतना कुछ है हमारे यहाँ धर्म को समझाने के लिए, So we have so much of लेकिन Vedas, अगर Shastra, नहीं है, Sahitya, हमारे पास समय नहीं है, but if we do not तो have हम कहते time to हैं learn कि anything, भाई मेरे को at least we क्या understand प्रतिकूल है what या is मेरे को क्या है, favorable to us, what is तो unfavorable ये to सब us. जानते हैं कि अगर कोई मेरे साथ में So झूठ कर रहा everybody है, knows that if somebody मैं किसी के is साथ में व्यवसाय कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, behaving in a लेकिन duplicitous way, वो मेरे lying, को धोखा देता है, somebody is झूठ बोलता है, cheating, तो क्या मेरे को अच्छा लगता है? do I like that? नहीं लगता ना। I don't like that. तो इसलिए ये नियम हमको ये बताता है कि अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसके So साथ this में हूँ, statement of Shastra says that तो इसलिए मेरे को since ऐसा you करना don't चाहिए, like दूसरों that, के साथ में you नहीं don't do करना that, चाहिए। don't do that with तो others सीधा सा सा also. धर्म का नियम है। It's a simple, कोई straightforward मेरा rule of सामान चोरी dharma. करता है If तो somebody क्या मेरा steals मतलब my मेरे से बगैर पूछे मेरी property, अनुमति के बिना stealing छीन means लेता है, taking without तो my चोरी है, permission, then I don't तो like चोरी that. करता है, तो इसलिए दूसरे That के is साथ not में मेरा favorable, नहीं that is होना चाहिए। unfavorable to me. Then I should not do that to मेरे others also. प्रति हिंसा करता है,
मेरे If को somebody दुखता is है, causing violence to me, मेरे को कटु शब्द beating बोलता है, me, गाली or देता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। speaking offensive words, तो I इसलिए don't like that. इससे मेरे को ये समझना चाहिए कि मैं दूसरों को भी So then I नहीं should मारूंगा, understand उसको that पीड़ा I नहीं should दूंगा, also not beat others, not cause उसको violence to दुखने others, नहीं not दूंगा। speak offensively to तो ये तो others. सीधा सा एक बहुत सामान्य सा So this सिद्धांत is है, a very simple, ना आपको straightforward मेरी जो वेद rule उपनिषद in पढ़नी for है which you उसमें don't have to study Ved, Vedanta, any Shastra. वो अगर हम पढ़ें तो अच्छा है, If we study that, it is very good. लेकिन I am not telling ये don't कहते हैं कि study, शास्त्र but में I am saying एक that साधारण सा in नियम Shastra there is दिया a हुआ है। very simple ये rule also नीति given. इसको बोलते हैं। And in Gita also Bhagavan परम says औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान भी गीता में कहते हैं Bhagavan छठे also अध्याय में says in Gita in the कि sixth chapter आत्मोपम्येन, कि अपने से तुलना करके आप देख लीजिए that you can कि जो आपको सुख compare, देता है, जो आपको दुख देता है, you तो can उसका analyze by साधु checking in समझिए, your own तो case. इसलिए If something is आपको giving समझ में happiness or आए कि distress ये to जो you, it will give सिद्धांत है happiness and distress ये to others also. आप दुखी So होना नहीं चाहता, behave with कोई दुखी others होना नहीं चाहता है, in such a way that you want others चाहे to बूढ़ा behave हो, with चाहे you. स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, Because चाहे nobody युवा wants हो, to चाहे suffer, वृद्ध हो, whether old, कोई दुखी young, नहीं चाहता। man, woman, nobody सब wants सुख to दुख suffer. चाहते हैं। Everybody तो wants जब मैं ये बात happiness. समझता हूँ तो इसका So यही when धर्म का I सार्थक understand अर्थ है कि this, मैं किसी then को this is दुखी नहीं the करूँ, simple rule of अच्छा लगे dharma तो मैं दूसरों को not to सुख दूँ, bring suffering in और others' दूसरों को lives. सुख देते हुए As तो साधु far बोलते as हैं, possible, only give जिसको happiness दुख in देता others' है lives. उसी को साधु बोलते हैं। So sadhu means who makes others तो happy, यही भगवान and समझाते asadhu हैं is one who brings suffering in कि others' आप lives. अपनी जितनी भी क्रीड़ा करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो इसी दृष्टि से करते हैं कि दूसरों को So सुख when दें। Bhagavan appears, he यहाँ तो appears with this goal only. ब्रज में सब लोग He पसंद wants नहीं to give करते, sukha to everyone. Why everybody in Braja सब likes किसी का Krishna? करते थे, Because Krishna used to सब serve प्यार से everyone. व्यवहार करते थे, He used to behave किसी से उनके वैर भाव नहीं lovingly थे, with everyone. He did not have दूसरों any को प्रेम enmity with करते थे, सबको anybody. प्रेम करते थे। And others also तो loved साधु him. का मतलब यही है जो Sadhu परोपकार means करता this है, only, परोपकार one पुण्य who है पापाय does benefit to परपीड़ितम। others. ये भी एक सीधा सा सिद्धांत है धर्म का कि परोपकार करना So this is a simple siddhanta of ये dharma. धर्म है, और दूसरों को पीड़ा देना ये पाप है या अधर्म Giving है। suffering to others is adharma, किसी and को doing बुरा लगे benefit ये अपने to को others, बुरा that is लगे, dharma. वो Now the अपने question हित may के be, लिए what है। is suffering? So apply it to तो yourself ये and check एक whether you feel happy or you बहुत ही suffer. संक्षेप में So इसका in a सार दिया है nutshell, शास्त्र में this is the essence of कि dharma. परेशान प्रतिकूलानि आत्मनः परिकूलानि परेशान ने समाचरित। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब ये So इस that's why प्रकार Bhagavan धर्म की says हानि हो जाती है, that लोग उसका like this, when अतिक्रमण dharma करते हैं, declines, people do not धर्माधर्म behave, अभ्युत्थानम act अजायते, according to dharma, अधर्म बढ़ then जाता I है, appear. When तदात्मानं adharma सृजाम्यहम्, मैं increases, then I आत्मा manifest myself. सृजामि का मतलब यहाँ Here प्रकट होना Srijami चाहिए, means to क्योंकि सृजन manifest होगा, himself, because सृजन Srij करना यानी Dhatu कि means बनाना। to do Srijan, to ये create. नहीं है कि वो अपना स्वयं So कोई नया here पैदा it does करता not है, mean that अपना his शरीर ग्रहण body is करता है, being born, it's being उसको created. प्रकट His करता है body is ताकि eternal. लोगों को He दिखाई दे। manifests it so नहीं that तो people can हमारी see. जड़ चक्षुओं से उनका दर्शन नहीं होता, Otherwise, with वो our material eyes, we इच्छा से cannot see him, शक्ति से but नहीं by होता। his own will, he makes तो himself यहाँ visible ये to us. बर्ताव करते हैं और हमको शिक्षा देते हैं। And then he appears in the यही मूल society, तार्किक and by his dealings, by his actions, he teaches इस us. श्लोक में So, बताया। this is the आगे वाले purport श्लोक में of फिर this verse. और थोड़ा Then, in the next verse, he will elaborate more. वचन यही समाप्त करते So, हैं, we किसी will को कोई stop here. प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। And if you have any question, you can ask. संदीप जी का प्रश्न है कि Question: सृजामी हमको कैसे समझे, how do we क्योंकि understand भगवान के Srijamyaham? दिन में Because एक Bhagavan दिन uh, आते हैं, तो क्या appears once धर्म in के one कार्य day नहीं of होते हैं? Brahma. So does the decline in dharma happen that time सृजामी only? हमको कैसे समझे, क्योंकि भगवान तो ब्रह्मा के दिन में एक How do we आते हैं, understand तो क्या वही Srijamyaham? भगवान Because Bhagavan स्वयं ही appears तो एक once अवतार in है, a day of Brahma. अनेक अवतार So थे, Swayam Bhagavan Krishna appears once, but he इसलिए has केवल so अपने many स्वरूप को हम नहीं avatars. कहें, So when we are वो अनेक discussing अवतार here, हैं।
We are not just talking about the Swayam Bhagavan form. He has so many avatars. They are limitless. भागवत में लिस्ट दी है पूरी और फिर कहा In कि Bhagavatam there is a list, संख्या नहीं and then it is said that there is actually you cannot the number cannot be counted. Actually, the number of avatars is limitless. Any other question? राधे राधे बाबूजी। बाबूजी मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई Question: राग द्वेष से हटता है और राग द्वेष से मतलब if ऊपर होकर somebody संपन्न rises होकर above डिप्रेशन raga से dvesh निकलता है and तो maintains the उसमें relations, गहराई वो कैसे ला सकता है, then मतलब how वो can he उसे bring कैसे emotion or डिप्रेशन depth in the relation? क्या इमोशन लानी है आपको? इमोशन So लाए तो what emotion do you want to bring? वही When तो there is उसकी भी emotion there will कैपेबिलिटी be है राग द्वेष raga dvesh. पे भी कार्य करने में। वो So प्रेम my से करेगा question, ना, फिर आप so उनको प्रेम कीजिए depth will happen तो by प्रेम से। love, राग not द्वेष by मन rag से है, मन dvesh. के संबंध से। Rag dvesh is related to प्रेम the body मन से ऊपर उठ के आत्मा के and संबंध से। prema is related to the atma. They are also atma भगवान only, के अंश हैं। and they are also अगर anshas आप of भगवान से Bhagavan. प्रीति करते हो तो So उसके if you अंश की have प्रीति करेंगे। preeti for Bhagavan, then you will have preeti for his anshas इमोशन also, or no? इमोशन So लाए one is that शरीर के you संबंध से, display emotion related to the वो बंधन का body, कारण बनेगा। that will become a cause और एक for है आप bondage. इमोशन दिखाएं तो And उसके other मन से is संबंध आना, other is वो you आपको show बंधेगा। emotion that is related to Bhagavan, that will become the cause of थोड़ा कठिन liberation. है क्योंकि उसका हमको अनुभव नहीं है। It is little difficult to धीरे understand धीरे because we have no prior थोड़ा experience आसान of लगता है और फिर this. छोड़ना कठिन लगता Our है। experience is only of raga dvesh. That's why it उसको appears छोड़ना easy, आसान and है, giving up प्रयास appears to be करना very कठिन है। difficult. But then we have to get the right understanding, and then we have to practice according to the right शरीर से understanding संबंध based on बनाकर आप shastra. करोगे तो राग If द्वेष में भी you बदल जाएगा। behave at based शरीर on बदल bodily जाएगा, attachment, then that raga dvesh will also change because body also उसका changes. If somebody is young, उसका he or she शरीर appears बदल जाएगा, beautiful. आदत पड़ जाएगी। When the face फिर आपका मन will नहीं होगा उसके change, साथ बैठने का। then you will not feel like sitting with him or वही माँ her. बाप जिनकी गोद में आप खेलो जब बूढ़े हो Same जाते हो, उनके parents साथ with भी नहीं whom होना चाहते। you enjoyed in childhood, when they become old, you don't want to sit with उनको them. भेज दो। You send them to old age home. लेकिन अगर आत्मा से करोगे तो आत्मा तो बूढ़ी होती नहीं है। But Atma does not चाहे become old. शरीर कैसे भी हो, अंदर आत्मा तो वही है। What no matter whatever is the state of the body, Atma is same वास्तव में only. संबंध तो आत्मा से ही है, भगवान के And माध्यम से। actually relation is with Atma only via Bhagavan. भगवान को केंद्रित रख के So संबंध keeping रखना। Bhagavan in the center, relation should be maintained. नवदीप जी का प्रश्न है कि क्या Next आज question. सही समय नहीं है जब भगवान आए Isn't और the कलयुग time, के isn't अंत it the में time for धर्म Sri स्थापना Bhagavan to करने come and के लिए re-establish जाने के Dharma? शेष रहेगा? By the end of Kali Yuga, there won't जाने be का much मतलब to आप save ये सोच रहे हो कि anyways. धर्म समाप्त हो जाएगा, वही मैं आपको So बताने saving लगा। means धर्म you are समाप्त नहीं thinking that होता है। Dharma will be destroyed. नियम That's what कैसे I said. समाप्त हो जाएंगे? Dharma is never सत्य में destroyed. How can rules be सत्य में जो है destroyed? उसमें क्या समाप्त हो जाएगा? Speak जो लोग truthfully. हैं उसको What is पालन there to करें be या ना करें, destroyed in that? It is up to people, they धर्म follow or they सदैव don't जीवित follow. रहता है। What do you mean it will not remain? मेरा नहीं का मतलब यही है ना कि कोई पालन नहीं कर रहा होगा, It will not remain होगा means नहीं, people are not following. So स्थापित नहीं Bhagavan होगा। will come and he will जैसे ensure that भगवान people है follow. वो तो मार भी देते हैं, So like जब Bhagavan नहीं is सुनता है तो उसको there, he can even kill ऐसे the कल्याण भी करते asuras. हैं। So that is also his mercy भगवान भी only. कल्याण करते हैं, By killing also he gives साधु लोग mercy. हैं वो अपने वचन Sadhus, से उपदेश they देके give mercy by their talks, their चलते हैं, instructions, यही they स्थापना है। teach people. This is Dharma तो इसी वजह Sthapana. से मैंने कहा कि धर्म की So that's गिरावट why, या as I उसका मतलब said, ये नहीं कि धर्म खत्म हो गया, धर्म decline in खत्म नहीं होगा Dharma किसी का। does not mean that Dharma कुछ is लोग नहीं है जो उसका पालन करेंगे, destroyed. Nobody can now see Dharma. It उनके means यातायात people, बंद there हो will be जाएंगे, no, hardly there will be पालन people who नहीं होगा follow उसका। that. Like there is कहीं भी traffic. हमारे देश में Now जैसे we छोटा see सा that, especially in our जुड़ा country, हो रहा है, people hardly follow traffic rules, but still now there is इसका मतलब ये improvement. थोड़े कि यातायात के नियम खत्म हो So गए हैं। does that mean the rules of traffic are पालन करना destroyed? जरूरी नहीं है, कभी भी पालन करो। If you want to follow, you can follow चाहे anytime. कोई भी पालन नहीं कर रहा है, वो भी Even if पालन करो, nobody else is कोई बात following, नहीं। if you follow, then there is Dharma. जोयल जी का प्रश्न है कि अगर शास्त्र में जो धर्म Next बताए गए हैं question. वो
संविधान से विरोध the है, dharma that is told in, if state law contradicts Shastra dharma, should one follow state law to avoid punishment, संविधान or का should उल्लंघन one है, break the law to या stay truthful संविधान to है तो Shastra? जैसे कोई उदाहरण दीजिए, शास्त्र के प्रति कोई So उदाहरण give some example, ये एक जनरल क्वेश्चन है. because it's a general question. धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें. उन्होंने क्योंकि कई बार जो है ना हम ऐसे सोचते हैं और उसका कोई उदाहरण होता ही नहीं है, तो कुछ उदाहरण तो दीजिए ना कि क्या है ऐसा So many times what happens, we just think, धर्म के अनुसार है. but we don't give any example. धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें. पीछे माइक देना. Babaji. यस. Thanks for the wonderful lecture. You made it very clear that dharma is sometimes joined to our very nature like fire, and then sometimes rules are made for us to follow. And obviously, as Vaishnavas, we have to follow Ved, Smriti and that. But sometimes we're living in a society where laws are created. For instance, you said, how to keep left or how to keep right in specific countries for wellness. But sometimes they also create laws that are antagonistic to Ved or Smriti. And in those conditions, an example would be like, give me an example. an example would be like, we should be protecting the cow, but yet in some Western countries, the law is very open for them to slaughter the cow. And now, as Chitragupta, we are failing our duty to protect the cow. So how does that affect us? No, if you can protect, then it is good, but you should not kill yourself. There is no injunction that if someone else is killing and you are unable to protect, then you will go to hell. If you have the power and you don't protect, then you are liable for it. But if it is beyond your power, which is the case, because we don't have power over the state, then we are not liable for that. उनका प्रश्न ये है कि अगर His question is सरकार that नियम बनाती है if government is making some law, हत्या, like say for example regarding cow slaughter, ये suppose खोले हुए हैं there are खाने, slaughterhouses, और शास्त्र कहता है कि गोरक्षा Shastra says that we should protect the cow, तो क्या हम क्या कर सकते हैं उसमें? then हम पाप what लगाएंगे? can we do? Shall we become will we become implicated in sin हमारी because we are not शक्ति है उसको protecting? रोकने की, So my answer is that if we हम have नहीं the रोकेंगे power तभी हमको to पाप protect लगेगा. and we don't protect, then we will be और implicated in sin अगर मेरे because पास we are पावर not following नहीं the है, dharma. But if I do मैं not स्वयं have that हत्या power, कर लूँ और दूसरा then कर रहा I है do not kill the जिसको cow शक्ति नहीं and है, others are उससे मुझे killing पाप and I लगेगा. don't have the power to stop them, then why will I become implicated in sin? Jai Babaji. Very nice. I was thinking of an example, maybe in this connection with following truthfulness, but Dharma might be, there might be some obstruction. In the case of Ambarish Maharaj, it was time for him to observe Paran, breaking Ekadasi, but Durvasa Muni came. So he was conflicted between Dharma but Bhakti and following Bhakti. No, but the conflict was resolved. The conflict was resolved that he can take water and do the parana, and that would not break Ekadashi, I mean the rule of parana. So that's what he did. But Durvasa thought that he broke Dharma and No, he did not break. It is Durvasa's mistake. Yes. That's why he has to come and fall down at his feet. Yes. Ambarish did not make any mistake. He did not break the law of karma or bhakti. But it was misunderstood by Durvasa. Ekor Prashna. We see that Krishna comes to establish Dharma, Yadari Yadari Dharmasha. But then in the 18th chapter, he tells Arjuna, Sarvadharma Parityajam, Mamekam Saranamrita. Can you comment on this? तो उनका प्रश्न ये है कि So his question is that Bhagavan is telling, I appear to establish dharma, but at the end he tells that give up all dharma and take my shelter. उसका उत्तर ये है कि So the answer is आपको यातायात के नियम का
उदाहरण देकर समझाता हूँ। Like, let me give यातायात के the नियम example धर्म of हैं, traffic यातायात rules. के धर्म The हैं, rules of traffic are लेकिन उस धर्म like का dharma, उद्देश्य क्या है? but what is the goal of धर्म that का अपने dharma? गंतव्य स्थान तक पहुंचना। The goal is to धर्म का उद्देश्य केवल इतना नहीं है to कि reach आप the धर्म को destination. करते रहिए। The goal of dharma is not just to keep following dharma. धर्म के लिए ही नहीं है केवल, Dharma ये है is कि धर्म not से just आप for the अपने sake of गंतव्य तक dharma. पहुंचे। Dharma is for the sake of achieving the भगवान की goal प्राप्ति of करें, human life. भगवान So की the goal प्राप्ति of dharma is to केवल ऐसा नहीं है कि हम धर्म करते achieve रहें Bhagavan, और भगवान की attain प्राप्ति Bhagavan. ना करें। ये तो जरासंध It का is नियम not that we था, just keep following धर्म dharma भक्ति था, but not do bhakti. धर्म का विरोध था। Like Jarasandh, he was a very dharmic religious person, but he was धर्म का antagonistic to उद्देश्य Krishna, युद्ध ही नहीं so है। he was killed. So the goal of इसलिए dharma is धर्म के not सात just आधार dharma. धर्म अर्थ Even if काम you और see the मोक्ष four हैं। purusharthas, dharma, artha, kama, and then moksha. So above dharma is moksha. जैसे एक श्लोक है, So like there is a verse, एकम कुलस्य अर्थे कुलम ग्रामार्थे त्यजेत, ग्रामम जनपदार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। कि अगर आपका परिवार है और परिवार के ऊपर so संकट like if आया you है, have a family परिवार को and there बचाने is a के लिए problem in the एक family, व्यक्ति there is के लिए some अपनी trouble, जान major trouble in सैक्रिफाइस family, so करने by के लिए sacrificing one member, if the family can be उसी saved, प्रकार अगर एक then गांव के save the ऊपर family. संकट है लेकिन एक परिवार को Similarly, पूरी if तरह there से is आप major नहीं trouble to बचा village, सकते तो गांव को but बचा if it is लीजिए। possible to save the village by sacrificing one ऐसे ही family, then save the एक गांव village. के ऊपर संकट है तो एक And गांव if को there बचा is लीजिए। अगर शत्रु कहता है कि एक trouble गांव दे दो मेरे को, मैं to the शत्रु whole को दे दूंगा, तो दे दो, district, लेकिन then by saving आत्मरक्षा one करने के village, लिए, if you can save the district, save it. लेकिन अपनी रक्षा करने But के लिए if to protect पूरी दुनिया को yourself, बलिदान कर दो। even if you have to तो अपनी sacrifice रक्षा the करने whole का मतलब earth, ये नहीं कि मैं सेल्फिश हो जाऊं, then do स्वार्थी हो it. जाऊं, So here, यानी कि for protecting yourself does not mean देश becoming के लिए selfish. अपनी What it प्राप्ति means के लिए, is ईश्वर that को प्राप्त करने के लिए, the उसके लिए आप सब goal कुछ कर of सकते हैं। life to get यानी bhakti, इसलिए गीता में भगवान if कहते हैं required, कि you can give up मैं everything आता हूँ लेकिन धर्म का उद्देश्य मुझे प्राप्त करना for bhakti. So Bhagavan says that है। I ऐसा appear धर्म to दिखाने के establish लिए मैं dharma, धर्म को दी but the goal of dharma is to achieve bhakti for me. It is not that you remain engaged in dharma and forget bhakti. So there is no contradiction, but it appears like सर्वधर्म contradictory. परित्यज्य का मतलब वहाँ धर्म का परित्याग करने का मतलब And ये there नहीं sarva dharman parityajya धर्म का मैं पालन ना करूं। does not mean breaking dharma or not following dharma. मेरा उद्देश्य, लेकिन अगर ऐसी स्थिति तो इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। So there is no contradiction there. प्रश्न है किसका? परमानंद जी का प्रश्न है कि Question: युधिष्ठिर जी ने I have a कहा doubt कि about धर्म Yudhishthir उसको Maharaj's जब हम statement प्राप्त करते हैं that dharma protects the तो one who हमें follows केवल dharma. केवल एक If मार्ग Bhagavan is से the only one चलना who होता can है establish and कि enforce dharma धर्म and he का is पालन कर सकते हैं independent, और वे why पवित्र would the रहेंगे। actions जैसे of मनुष्य an व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही insignificant पर person प्रभाव as पड़ेगा myself have any कि influence मैं धर्म से on रक्षित हूँ whether या or नहीं। not I am protected by dharma? वो धर्म की स्थापना किसके लिए कर रहे The हैं? answer: आपके लिए ही तो कर रहे हैं। why is he establishing भगवान को dharma धर्म for की you कोई only? आवश्यकता नहीं है। Bhagavan does not need dharma. मैंने कहा ना कि समाज I को told earlier that व्यवस्थित बनाने के in लिए order to maintain order in the ऐसी स्थिति society, आती है। dharma is समाज व्यवस्थित नहीं established. है ना, So it is we who are living in the जो society. पावरफुल है, जो शक्तिशाली व्यक्ति Otherwise, है, one who is जो लोगों का powerful, शोषण कर he रहा है, will exploit the तो weak इसलिए धर्म person. से हमें ही लाभ है। So dharma is जो for धर्म our own शक्तिशाली benefit. व्यक्ति के लिए है और So एक dharma is for the दुर्बल upliftment व्यक्ति of के लिए, society दोनों के लिए। and for individual upliftment धर्म का also. लाभ जो है वो The व्यक्तिगत benefit लेवल of पर dharma भी है, is राष्ट्र at लेवल पर भी individual है level और पूरे as well सोसाइटल as लेवल पर भी। societal level. तो तुच्छ व्यक्ति के लिए ही वो धर्म की स्थापना करते हैं। So for insignificant नहीं तो हम कर्म person, के बंधन में पड़े रहेंगे, आप mainly कर्म he करेंगे तो आपको establishes भुगतना dharma. पड़ेगा। Otherwise, we get इसलिए धर्म implicated का in कोई the वो नहीं है। karma and then we suffer. तन्मय जी का प्रश्न है कि Question बताया कि हमें regarding the ऐसी idea स्थिति that में one should not do जिसमें something that we don't like हमें done to करना us. खुद नहीं अच्छा लगेगा। The तो major एक challenge is that व्यवहार में एक चुनौती आती है कि sometimes in our हमें ऐसा dealings निर्णय लेने we पड़ते have हैं to decide जहाँ पर between एक two व्यक्ति different individuals उस निर्णय लेने से खुश and रहता है we और have दूसरा to व्यक्ति pick one course उस of फैसले action में that dissatisfies one and pleases the other. मुश्किल
This is what I find difficult because one person becomes dissatisfied and unhappy. तो देख लिए शास्त्र में कौन सा सम्मत है। अब मैंने ये So थोड़ी then कहा कि answer, you have to check in Shastra. ये नियम जो है I never said that you just follow that only one principle, that तो साथ में शास्त्र भी तो है do, ना। don't do आप तो what बिल्कुल शास्त्र you के don't want to be done to अज्ञानी us. नहीं है। So Shastra is there. You are not ignorant of in Shastra. So check Shastra. नियम है ये तो उसके जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है शास्त्र का। This rule, what I said, it is for the person who doesn't know anything about Shastra. So at least follow this much. शास्त्र क्या कहता But है we उसको who पता नहीं। understand Shastra, we should follow Shastra. प्रश्न है कि धर्म की Question: विभिन्न परिभाषा है और धर्म की मूल परिभाषा Dharma has different definitions, and the main definition of dharma is dharayati iti dharma. So, how do we understand that? Like in the context of this definition, how do we understand paropakar, doing benefit to others is dharma, and giving suffering to others is adharma? So, what will do dharan? Paropakar or giving suffering to others? What holds to this? What will hold the society? What will maintain society? Doing benefit to others or giving suffering to others? If you make others suffer, they will become revengeful against you. So that will lead to that will bring order in the society or chaos. What will it bring? नवदीप जी कहते हैं कि Next आज के question. समय में In ब्रिटेन modern और times, यूएसए countries like the भारत Britain and the USA have used power अन्य and देशों का शोषण करने के लिए cunning to exploit others, such as India and parts of Africa. They do not follow dharma as outlined in Vedic literature, nor do they seem concerned about the consequences of adharma. Yet they remain materially prosperous and continue to dominate others. Why do such adharmic nations succeed materially despite disregarding dharma? ये तो आपके ऊपर आप सफलता किसको So it is up to you what is success according to you. 55% लोग मानसिक रोगी हैं, क्या वो The सारे country in which 55% people are 55% suffering mentally, जो in America, it is said that 55% have mental को आप disease. सफल मानते हैं So, for you, according to you, that is कि success. वहाँ अच्छी सड़कें हैं You just see they have good roads, लेकिन मन people से wear nice विकृत है। clothes, but mentally they are suffering so much. तो एक कहते हैं ना कि So, साउंड like it माइंड is इन said, साउंड बॉडी, sound mind in sound body, and other is इन साउंड बॉडी। crazy mind in sound body. तो आप क्रेजी माइंड इन साउंड बॉडी को सफलता मानते हैं So, according to या you, क्या? crazy mind in a sound body is success. That may be success according to you, but not according to me. I was thinking there's another example in Mahabharata of Param Dharma, as you explained earlier. So in the case of Yudhishthira, Dharmaraj, Krishna said, you say that Ashwatthama is dead. And he hesitated. And some say that his chariot, when she never touched the ground, came down because he told a lie. But actually we know that it was because he didn't follow Krishna's instructions. So. यस, चलो बंद करते हैं। प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।